अब इसमें आने लगा, उसका खत्म हो गया, देखो अब इस वाले में आता है। देखो अभी इसमें आ रहा था, अब इसमें भी आ रहा है।
देखो थोड़ा थोड़ा निकाल दो ना पूनम, तो आता है बराबर। देखो ये डाल रहा है, ये डाल रहा है दोनों में आपके। मिश्रा बहन, पूनम, और कौन है, पांडे बहन, अंजू बहन, रिंकी बहन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा, हर हर महादेव। अर्चना, स्वागत है मेरी लाइव में। ऑन करके पूनम का रख दो दोनों आईडी। ऐसा आ रहा है, एक का एड खत्म। इसमें एड आ रहा है। और पांडे बहन, क्या हाल चाल है? खाना पीना हो गया आप सभी लोगों का? हर हर महादेव, राधे कृष्णा। ये वाला फ़ोन डिस्चार्ज एकदम हो गया, 10% बचा है।
पूनम लाइव बंद हो गई क्या? पूनम लाइव आपकी बंद हो गई क्या? पूनम फिर से चालू करोगी? लाइव बंद हो गई। बंद हो गई। मैं लगाई हूँ तो क्यों गोल गोल घूम रहा है, देख रही तो बंद हो गया। अब नहीं चालू करोगी? नहीं, जैसे बाहर निकल के मैं तो बाहर आ रही थी तो 5-5 मिनट में बाहर निकल के आ रही थी। एड बराबर जैसे ऐसे एड आता है वैसे बराबर एड आ रहा था। लेकिन सब ऐसा नहीं करते ना, ऑन करके रख देते हैं तो कौन निकलेगा। और प्ले लिस्ट से नहीं आता इतना एड, कहने को है ना प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट से एक बार आता है, उतना नहीं आता जिस हिसाब से एड सेटिंग करने पे आता है, वैसा नहीं आता है। हाँ, वो ऐसा नहीं आ रहा था। एक बार जब एंट्री लिए तब आया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे आईडी इधर उधर सरका के 25,000 रुपया कौन भेजा? समय समय कौन भेज फिर? कल 12 बजे के बाद भेज तो 11 बजे। अर्चना दोनों आईडी से आने के लिए धन्यवाद मेरी बहन।
बाय बाय रिंकी, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन सपोर्ट करने के लिए। आप सब ऐसे सब लोग साथ बनाए रहिए। एक महीने तक किसी के लाइव में नहीं जा रही थी ज़्यादा, जैसे लग रहा था कुछ गुमा हुआ है। फिर भी हमारी पांडे बहन तो नहीं साथ छोड़ी, बराबर आ रही थी। दवाई खाए, रोटी ले वो। हमारा किचन लगा दे, यही वाला लगा दे, कोई चार्जिंग में ले जाए, ये वाला ऑन कर यही लिया, यही चार्जर हम वो लगा दिए, यही लगा दिए, अपने लगा दिए, दोनों अपने अपने लगा दिए, तो हाथ चार्ज हुआ। मामा वाला ऑन कर गई किचन में था, यही रात में थोड़ा लाइट कम कर दे, एकदम लाइट कम कर दे। ये अंकुर नीचे चलो सोफा से, अभी सोफा पे भाई सोएगा, आएगा चिल्लाएगा, नीचे आओ मेरे पास आओ, चलो। मेरे पे तो तक तो पसारा रहे, बिस्तर बल्ली बना दे, तो उसको तो जैसे कोई दिमाग में नहीं आता क्या करना है क्या तो नीचे सोगी गद्दा बैग क्यों निकाल लिया बेड में से? वो निकाला, पहाड़ जैसा बेड में रख भी नहीं पाते उसको, होता है कि अच्छा कल रुक मैं इसको रख देती हूँ। कोई अंदर चीज रख दो तो इसको जैसे चैन ही नहीं करता, निकाल के बाहर फेंक देगा। पहाड़ जैसे ये बेड हो गया है, उठाऊं डर लगता है कि पाँव डाली हुई है सरक जगह। अरे तो भी कल इसको इसको जल्दी छूटी नहीं, मत छुआ करो, गिर गया तो गोड़े नहीं हाथ टूट जाएगा, इसका पैर टूट गया है ना, इसको निकाल। महादेव सबको बहुत बहुत धन्यवाद, माँ जगदम्बा की कृपा सबको बनाई। अभी सर्वेश रात में लाइव चालू करने लगे, पूरी रात उनकी लाइव चालू रहती है। मेरी रात में शाम को रात को ही चालू होती, दिन में चालू नहीं होती। बोले थी सब लोग सपोर्ट करो मेरा, 10-12 दिन में बाद में सपोर्ट करो। कहाँ इतना टाइम है बहन, ऊपर खाना पीना। हाँ पांडे बहन खाना पीना हो गया, अभी बस ये दवा खाई और लेटी। दवा बगैर तो एक दिन चलने वाला नहीं है। अभी वही बस आप मुझसे बात ही करी थी, दवा खा के लेटी हूँ, खाना ना बन गया, खा लिए सब हो गया। अरे 11:30 बजने वाला है, सुबह फिर 5 बजे 6 बजे से उठ के फटफट करना है। आज ब्लाउज कल का ही काटे थी, आज तो थोड़ा उसको सिली। बस सही पांडे जी ऐसे। अब मेरा तुम्हारी रात में नहीं खाली रहता मोबाइल, और
अब अपना ही चलाई हूँ, अब अपना बंद करके कोई थोड़ी चलाएगा बहन। और दिन में उनका लाइव तो चलता है, मैं कर सकती हूँ उनको सपोर्ट। अब जो वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगी तो फिर मैं जो मुझे सपोर्ट कर रहा है मैं उसको करूँ कि उनको करूँ, वही बात है ना। जैसे अगर एक आध घंटा मुझे देती तो चलो, अभी मैं उस दिन दी थी, उनके पास मेरा है भी 1 घंटा 2 घंटा है भी, ये चले जाने दो, 1 घंटे 2 घंटे से कुछ नहीं होता, इतना नहीं सोचते। लेकिन अब कहाँ टाइम है बहन की, अब रात भर अपनी लाइफ चली, अब अपनी आईडी निकाल कर उनके मैं लगाऊँ, और चलो मैं लगा दूँ, वो भी मेरा सपोर्ट करे तो चलो कोई बात नहीं, वो नहीं करेंगी, मैं ही निकाल के अपना भी, वो भी ना करें, अपना भी उनमें लगा दूँ। आज पता है, आज मुझे 5 पॉइंट सिर्फ मिला था, मेरा टेंशन इतना हो गया, बोले देखो इतनी आईडी लगती है। हाँ खा लो, टाइम हो ही जाता है, फिर सुबह उठना, इसी पूरे घर में यही चिल्लाते कि अभी तक इतना मर रही थी, अब आराम हो गया तो फिर चालू कर दी फिर चालू कर दी तो क्या करूं, जैसे कुछ गुम जाता है ना, चलाओ ना तो जैसे लग रहा है कुछ गुम जाए, बौखलाहट जैसा लगा रहता है, वैसे ही लगा रहता है। एक फूलचंद पांडे थे, इनके लाइव में कभी गई हो? पहले मैं जाती थी। फूलचंद तो अच्छा थे, बात अच्छे से करते थे, उनकी वाइफ चाय 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 बहुत करती थी, मैं छोड़ दी। एक बार मेरा कमेंट डिलीट हो गया, मेरा कमेंट डिलीट कर दी, मेरा कमेंट डिलीट कर दी, बताओ मेरा वॉच टाइम कट जाएगा। मैं बोली मैं जानबूझ के थोड़ी है कि डिलीट हो गया तो उसके लिए मैं क्या करूँ, क्लिकर लगा है डिलीट कर दिया, अब मैं इसको पकड़ी थोड़े, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे जी इतना गुस्सा आया, मैं तुरंत बाय बाय करके चली आई। आज बहुत दिन के बाद आज चल रही थी तो मैं ऐसे लेटी थी, 2-3 कमेंट की क्या हाल चाल है, बोली श्रद्धा दीदी आप कहाँ से आ गई, कभी नहीं आती, आदत हो गई इसलिए। हाँ सही है बोले, मैं बोली मोनो हुआ, अरे मोनो कराए थे, गलत मोनो कोई कर दिया, समय दे दी, बोली तो जब समझ के नहीं करोगी तो होगा ही। ये सब चीज़ बहुत सावधानी से करना चाहिए, जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। गलत ऑप्शन दबा दोगी तो ऐसा फिर अगर एक बार गड़बड़ हो जाता है तो बहुत लंबा प्रोसेस। अच्छा अर्चना, अर्चना अर्चना मेरी बात सुन रही है? सर्वे उनको, अरे क्या बोलते, ब्रिजेश चौधरी का मोनो हो गया ना, क्योंकि उनके वीडियो पे मैं देखी, उनके वीडियो पे डॉलर का निशान दिखा रहा था। हाँ पहुँचे पहले, अरे कहीं नहीं गई हैं, चलाती हैं रोज़ लाइव, उनकी लाइव नोटिफिकेशन मेरे पास रोज़ आता है, लेकिन मैं कभी नहीं जाती। हाँ बहुत फालतू, मतलब ये कमेंट के लिए इंसान, मैं बोली तुम, मुझे बहुत गुस्सा, बोली ठीक है मेरी लाइफ में आना, तुम ये नहीं, तुम 10 कमेंट डिलीट कर देना, जितना सपोर्ट नहीं की उतना मेरा वॉच टाइम कट गया। ये तुम देखी क्या किससे वॉच टाइम कट जाता है, अंधे बहरे वाला संदेश बना के रख दिया, मुझे बहुत गुस्सा लगा। बोली तुम मेरे लाइव में आना, मेरा 1 कमेंट डिलीट हो गया है अनजाने में, तुम जानबूझ के 10 कमेंट डिलीट कर देना, ठीक है अब शांत रहो, चिल्लाओ मत, आज के बाद मैं तुम्हें लाइव में नहीं आऊँगी। वो भी नहीं दिखती, पवन पवन की लाइव नहीं दिखती अभी, वो भी लग रहा है लाइव बंद कर दी कि क्या हुआ, वो भी उसकी भी लाइव नहीं दिखती, पवन की भी बहुत का लाइव नहीं दिख रहा है। अर्चना मेरी आवाज़ सुन रही हो? ये ब्रिजेश का हो गया मोनू, उसका बेचारी का तो आज 6 महीने हो गया होगा चैनल पूरा हुए, मोनो नहीं हो रहा था, अब जाके हुआ है लग रहा है फोन का चैनल। वो ब्रिजेश है, ब्रिजेश जो आती थी अपनी लाइव में आपके मेरे में, उनका चैनल फंस गया था तो क्या हुआ, मोनो हो गया। अच्छा ब्रिजेश का अर्पिता का दोनों का हो गया, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। अभी लाइव नहीं चलाती क्या ब्रिजेश? एक दिन मैं देखी थी थोड़ा लाइव चला रही, चलाई फिर बंद कर दी। पवन का चैनल कोई हैक कर दिया, अरे अरे कैसे डिलीट हो गया? पवन का भी नहीं दिख रहा है चैनल। वही रेखा बहन वो बता रहे थे मेरे घर पे पवन आई है
खाना खा रही है, फिर उसी के बाद आई तो 2-3 दिन में पवन की लाइव देखी थी, तो मैं तो जाती नहीं पवन के लाइव में। पवन के झूठ से मुझे बहुत गुस्सा एक दिन लग गया था। ऐसा इतना मेहनत करता है, उसके बाद कुछ हो जाता है। उसका मोनो भी तो हो गया था पवन का, लाइव दोपहर में कभी खबर चला। अच्छा, दोपहर में कभी कभार चलाती हैं पवन की ब्रिजेश? ब्रिजेश तो कभी आती भी नहीं किसी के लाइव में। कैसे डॉलर बनेगा जब न वीडियो जा रहा है न लाइव चलाओगे? तो डॉलर पर मोनो ही कर लेने से कुछ थोड़ी हो जाता है। जब डॉलर ही नहीं बनेगा तो मोनो क्या करके क्या हो जाएगा? अरे मेरे से झूठ बोल रही थी अर्चना ना, एक दिन आई मेरे लाइव में, लगाई, एक कमेंट की, उसके बाद गायब हो गई। 1 घंटे पूरा लाइव चल गया, उसके बाद आई तो बाय बाय की। बोली तुम थी कहाँ न? और मैं प्यार से ही बोली, बोली वो पवन थी कहाँ इतना टाइम तक तुम्हारा? तो बोली मेरा क्लिकर छोड़ दिया था। अभी लग रहा है पवन दूसरा घर, पहले दूसरे में रहती थी, एक चाली में छोटा सा था, अब तो लग रहा है फ्लैट जैसे है उसमें रहती है, क्योंकि वीडियो देखती हूँ ना। हाँ, पता ही नहीं उनका कब लाइव चलता है। पहले तो दोनों मीटिंग आती थी मेरे भी लाइव में, 12 बजे 9 बजे रात में भी जाती थी। अभी तो आती ही नहीं है, मैं उनकी लाइव कभी देखी भी नहीं। एक बार बीच में जब उनका मोनो नहीं हुआ था तब देखी थी, तो ये हाल चाल लेने चली गई थी। अच्छा, वैसे 2-5 मिनट से क्या सपोर्ट मिलेगा? लाइव चला रही है तो कम से कम तो 2 घंटा चलाना चाहिए। क्या मिलेगा उसमें? तो कुछ पॉइंट भी नहीं बनेगा। अच्छा, लाइव तो पेड़ वाली लाइव नहीं चला पा रही हैं। नहीं, सीख लेना चाहिए। इतना दिन हो गया, कितना दिन हुआ क्योंकि ब्रिजेश का मैं याद 3-4 दिन हुआ एक वीडियो देखी, हाँ, तो उस पर डॉलर का निशान आया, तो ब्रिजेश का लग रहा है मोनो हो गया चैनल। तो उनका पूरा वीडियो खंगाल के मैं देखी, तो सुपर पे देखी तो उनका यस का निशान था, तो उनका मोनो हो गया ब्रिजेश का। अरे बहुत दिन के बाद हुआ बेचारी का, आज का उसका पूरा हुआ है। मेरा नहीं पूरा हुआ था तब उनका सितंबर जुलाई या अगस्त का पूरा हुआ था। तुम्हारे से 1 ही 1.5 महीने बाद ब्रिजेश का पूरा भी हुआ था। ब्रिजेश का तो सुनी तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। अच्छा, तो पवन का चैनल डिलीट हो गया कि बंद हो गया? क्या हुआ है पवन के चैनल? भले लाइव में किसी के नहीं जा रहे थे, लेकिन दिख तो रहा था। उनसे, रेखा बहन से तो बात होती होगी पवन से, क्योंकि उनका कांटेक्ट है, उनके घर पे भी गई थी ना पवन। पवन हमारे मायके की तरफ की ही है, नज़दीक की है एकदम, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर की ही है पवन। पवन बहुत दूर की थोड़ी है। नहीं, पहले अच्छे से बोलती होती थी, अच्छे से थी। बाकी उसके लाइव में एक आता था समीर खान करके, उसकी वजह से मैं एक बार उनका लाइव भी छोड़ दी थी, नहीं जा रही थी। तो फिर अपने लाइव में आई तो उससे बोली कि तुम सादा दीदी को मत कुछ बोला करो, उनको गुस्सा लगता है। उससे बोली कि उसको बोला करो फालतू बदतमीजी मुझसे मत किया करे।
तो बोली शारदा दीदी को नहीं पसंद है मजाक, बार बार बोलता था शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय। इतना गुस्सा, तो मुझसे बात ही नहीं कहती थी, बदतमीज है। और उनसे दिन एक एक घंटे ही करती थी, तो उससे भी मुझे बहुत गुस्सा लगता था उनके ऊपर, इस बात से भी। सामने वाला तुमसे बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो, तुम ही हंस रही हो, तो इसका मतलब तुम्हारी रजामंदी है। तुम एक बार डांटोगे वो कैसे आएगा तुम्हारी लाइफ में? हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो। एक सपोर्ट के लिए कुछ भी बोलता रहे, मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए। चलो, इस चीज़ की तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई अर्चना कि ब्रिजेश का मोनो हो गया। उनका कभी कभी मेरे दिमाग में बहुत टेंशन था, बेचारी का मोनो नहीं हुआ। इतना मेहनत की कौन बता। अरे एक आता था उनके लाइव में, आपको भी पता होगा, समीर खान नहीं एक आता था, उन्हीं से उल्टा सीधी बातें बोलता था। मैं तो उससे कभी बात ही नहीं की। एक बार मेरे से बोला कि "आप कहाँ रहती हो बम्बई में?" तो मैं बोली मैं साकिना का रहती हूँ। तो बोला मैं भी साकिना का रहता हूँ। तो बोली ठीक है, ले आऊँगा मिलने, तो मिलने आओगी? बोली। तो उसके बाद मैं कुछ नहीं बोली। तो मेरा टाइम भी हो गया था, तो मैं बाय बाय करके चली आई। लेकिन मैं बाय बाय कर दी, लेकिन लाइव में उनके बनी रही, मैं आई नहीं। तो बोल रहा है शारदा मैया को कोरोना हो गया, कोरोना वायरस हो गया, भाग गई शारदा मैया। शारदा मैया भाग गई। इतना गुस्सा लग रहा था कि भी इसको कमेंट पे 4 गाली सुना दो, लेकिन फिर भी नहीं, नीच से कमीनों से इतना फालतू बहस नहीं करके मेरे लाइव में आके उल्टा सीधा कमेंट करने लगे, तो क्या करूँगी? कुछ नहीं बोली। जब उनके लाइव में जाती तब बोलो बोलो शारदा मैया की जय, बोलो बोलो शारदा मैया। हाँ हाँ, मैसेज उसका चैनल कोई खराब किया है। हाँ, इस मैसेज अच्छा, हाँ तो किया होगा कोई। फालतू गिरी करेंगी तो और क्या होगा। हो तो गया इतना दिन, 1 साल लाइव चलाते, कभी किसी की मजाल है किया कि लाइव में कुछ उल्टी सीधे कमेंट किया हो आज तक? आप लोग भी तो आती थी इतना दिन तक। तो दिन आई कौन मेरे लाइव में, मैं उनको खूब डांटी। मुझे उसको बोल देना कि फालतू मेरे से, मैं कमेंट करती हूँ चली आती हूँ, अब मेरा नाम मत ले। फालतू जो कमेंट कर रहे हो, तुमसे बात करे तो मुझसे बात करे, मेरा नाम मत ले उसमें। फिर भी वो कुत्ता शारदा, कोई बोलता नहीं था शारदा मैया की जय, बोलो बोलो शारदा मैया की जय। 10 कमेंट करता था तो 1 कमेंट में बोल देता था बोलो बोलो शारदा मैया की जय। अपने सबके लाइफ में ऐसा कोई नहीं, कभी नहीं कोई आया, कभी कोई नहीं, कोई नहीं आया, कभी नहीं आया। वैसे रिप्लाई नहीं देंगे तो आएगा कैसे? भाभी जान, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? भाभी जान पहले दुपट्टा सर पे लो तब मैं बात करूंगा। भाभी जान पहले ये करो तब। अरे धत। और उसका कुछ बैठने का ढंग भी सही नहीं रहता था, जैसे सब पूछो ना अर्चना, जिसका लाइफ मुझे नहीं जमता ना, फिर मैं जाना भी नहीं पसंद करती, मुझे छोड़ ही दो। हाँ, आज तक पापा 4 जीता, उसको भी मारेंगे, हमको भी। हाँ बोला मैं आऊँगा मिलने, तो बस मिलने आऊँगी, कुत्ता तो है कौन मेरे से मिलने। नहीं मैं कुछ नहीं, मैं बोली देखो क्या है ना अर्चना, बदतमीजों से अगर बोलोगी तो हम उसका सामने तो है नहीं कि उसका कुछ कर सकते हैं। कुछ भी कमेंट में लिख देगा, कल को हमारे लाइव में आएगा आईडी बदल के उल्टी सीधी हरकतें। देखी तो एक रीना जय बालाजी थी, पूनम को पता है, मेरे भी लाइव में आती थी, तो आपके लाइव में नहीं जाती थी शायद, पूनम के लाइव में आती थी। उनके में एक इतना हैरान कर रहा था, दूसरे के ही लाइव से मिला था,
शायद उनकी लड़की किसी के लाइव में सपोर्ट कर रही थी और उधर उसको लाल मुंडी गेम ओवर भेज रहा था, तो बोली अंकल भैया इसको नहीं भेजती। उसके बाद वो आया खुद उनकी लाइव में, वैसा हर समय आईडी बदल बदल के वही लाल मुंडी, वही गेम ओवर, वही बाप बोल बेटा। एक दिन मुझे पता ही नहीं था, मैं सपोर्ट करने गई, अब रीना बहन बोल नहीं रही हैं, वो उल्टा सीधा कमेंट किए जा रहा है। मैं सोच रहा आखिर है कौन। मैं बोल रही हूँ कि भैया लाल मुंडी नहीं भेजती। अब रीना बहन बाद मेरे लाइव में आई तब बताई कि मैं सोच रही थी कि सादा दीदी आप कितनी जल्दी चली जाओ, तब एक आदमी को ब्लू दी तो वो उनको हाइड किया। सही वही तो वही कि इतना फालतू उनको परेशान कर रहा था वो आदमी, तब से मुझे बहुत डर लगता था। मैं जल्दी किसी से पहुँच नहीं कहती भी। आज भी कोई अनजान लोग आएंगे मेरे लाइव में, हेलो नमस्ते, मैं रिप्लाई ही नहीं देती कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, भैया दीदी मैं बोलती ही नहीं। कोई लेडीज आएगी तभी मैं उससे बात करती, कोई भी जेंट्स आता है ना तुरंत, मतलब कितना भी कमेंट करते हैं मैं बोलती नहीं। देखती हूँ कमेंट लेकिन बोलती नहीं। मैं देखी हूँ कई जन के लाइव में ना उल्टा सीधा बोलते। एक बार ब्रिजेश के भी लाइव में एक इतना गंदा गंदा गाली बोल लिख दिया। उस दिन ब्रिजेश बेचारी का दिमाग खराब हो गया, बोली दीदी मेरा दिमाग आप सुनी देखी नहीं। बोली मैं नहीं देखी ब्रिजेश, क्लिकर चल रहा है, अब कहाँ देख रही हूँ। अब क्लिकर चल रहा है तो कैसे देख पाओगी कौन क्या बोल रहा है। अब जैसे मैसेज चेक करके लगा दे रहा हूँ वापस। क्या मैसेज चेक कर ऑन करके रख दो। तुम्हारा कल 1:30 बजे का ट्यूशन है। हाँ कल 1:30 बजे का ट्यूशन है। मामा का मोबाइल चलता है अंदर देखो किचन में। हाँ चल रहा है। हाँ इसको भी लगा के वहाँ ऑन करके रख दो टीवी के वाले प्लग में। तो नहीं सब खाना वाना हो गया अर्चना? ठीक है पूनम, तुम्हारा तो मैं कर भी नहीं पाई अच्छे से, लाइव भी बंद कर दी। कल 9 बजे चालू करना पूनम, तो मैं तीन आईडी लगा, एक अपना लाइव चालू कर दूंगी, नहीं तो अगर मेरा खाली जगह 4 आईडी आपको रात में लगा दूंगी। ठीक है, और बच्चे अच्छे सब ठीक हैं? वो है रख दो मशीन पे, चार्ज होने दो। हाँ चना मेरा भी खाना पीना हो गया, लेटी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ बहुत दिन के बाद। रात में जल्दी बात नहीं करती, लेट जाती हूँ। आज आप लोग मिल गए तो बात करने लगी, नहीं तो कोई इसे कम सब करके ऑन हो जाती हैं, तो क्या बात किससे करूँ। हमारी पांडे बहन भी खाना खा रही हैं। अंजू हैं 2 कमेंट 4-5 कमेंट की, उसके बाद उनका आता ही पता नहीं रहता, फिर लास्ट में आएंगी बाय बाय करेंगी। तो मिश्रा भी हैं, वो भी पता नहीं कहाँ हैं। मिश्रा बहन हो लाइव में हो तो कमेंट करिए। अंजू बहन, मिश्रा बहन, हाँ टाइम तो नहीं मिलता। अब सुबह का टाइम तो मैं लाइव चलाती थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, और जब से सुबह का लाइव बंद कर दूँ ये सबसे बड़ा आराम हो जाता है कि सुबह से सबका सपोर्ट कर देती हूँ, दोपहर होते होते सबका ख़त्म हो जाता है। नहीं तो 10 बजे तक अपनी लाइव चल जाती है, लोग लेट आ जाते थे, उसके बाद सारा दिन आराम नहीं मिलता था, एकदम हयात यही बीमारी का घर बन गया। बस यही है कि हाँ वो तो होता ही है। ओझा जी स्वागत है मेरी लाइव में, राधे कृष्णा। ये देखो मेरे हस्बैंड की आईडी है, यही नहीं ईमानदारी से लगाए रहें। अब सब तो ऐसे नए नहीं है, सब अपने हैं, पुराने ही हैं।
आह, आगे गाड़ी बैठ के गल आ गए, खाना ना खा लिए। 11:44 हो गया, 12:15 बज गया। चलो सोऊंगी मैं। और यहाँ नहीं है, वहीं से कंपनी से करते हैं सपोर्ट। हफ्ते में एक ही दिन आते हैं, संडे को। परसों आएंगे। चलो इधर हमको बाहर देखो, देखो साके में चलो। खुद ही खाना खाने के पेट फूल जाता है तो सांस ही नहीं आती ऊपर नीचे। राधे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो मोबाइल देख लो तो ओकरे बाद हाँ लगाए के चार्जिंग में लगाई ली हमारे तक से हो जाए चार्ज। ये लाइट चलते मोबाइल में चार्ज हो जाए लगाई दो।
अब बस कर रात भर वही के ऊपर लगा दे। अर्चना पांडे बहन और जो हूँ प्लीज़, अब मैं सोने जा रही हूँ बहन, फिर सुबह उठना है। बीच में आँख खुलेगी देखती रहूँगी, और आप लोग का टाइम हो जाएगा तो आप बाय बाय कर देना।